यस, चलो कीप रीडिंग. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. टेल मी व्हाट इज फ्लूइड्स. फ्लूइड्स मींस फ्लूइड बोलते तो सुना नहीं है. फ्लूइड्स मींस The ability to flow. anything which can flow Can is called fluids. Liquid is also fluid only. Gas also comes under fluid. Okay, so in this chapter में we are studying two parts में. One is statics, fluid statics है, static fluid. और and दूसरा one क्या है, dynamics. Okay, dynamics of the fluids. मतलब dynamics of the fluids means the fluids start moving, flowing. That is one part. ये वाला स्टैटिक फ्लूइड वाला हम लोग देख लेकिन 12th क्लास में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रहेगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस आर रेस्ट. एंड देन आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आएगा, चार्जेस आर इन मोशन. दैट मीन्स करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पूरा आएगा. इसी इधर भी ऐसे पहले पानी पूरा रेस्ट में, इट इज नॉट मूविंग. देन सेकंड पार्ट में द वाटर स्टार्ट फ्लोइंग. उसमें थ्योरम्स आएगा, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये वो सब कुछ आएगा. इसमें तो आपको इजी है, बेसिक्स है पूरा. ओके चलो. So first definition of the first we are doing static fluids है पूरा. Until क्या क्या पढ़ने वाले static fluids में, we will study basic thing about density. Density क्या है, and majorly comes under pressure only. Pressure पढ़ने वाले पूरा pressure कैसा रहेगा fluids में. Fluids में pressure कैसा है, okay. As depth में कैसा है, कौन सा, how to measure the pressure, ऐसा पूरा basics will be there. And Archimedes principle will be there. Pascal's laws will be there. These are all things we will study in statics of fluids. Okay, chalo. So लिखो definition fluid का. Fluids are substances that can flow easily. This includes both liquids and gases. Okay. And दूसरा, whenever you apply a tangential force on the fluid, क्या होगा मालूम है, it continuously change होता जाएगा. देखो, it offers no resistance to shear stress. That is, it continuously deforms when tangential force is applied. देखो, a solid है, if I apply tangential force to the solid, थोड़ा बेंड होके रुक जाएगा. थोड़ा ऐसा इसको आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आएगा, शियर स्ट्रेस बोल के. आपको फोर्स ऐसा लगा, tangential लगाने से पहले इधर था, थोड़ा स्लाइड हो जाएगा. लाइक किताब को when you elongate like this, what will happen, the book will move like this, right? थोड़ा मूव होगा ना. बट इसमें क्या होगा मालूम है, फ्लूइड में क्या होगा मालूम है, इट कॉन्स्टेंटली, इफ यू अप्लाई कांस्टेंट फोर्स आल्सो, कंटिन्यूअसली इट इज मूविंग. मतलब लेयर टू लेयर होता जाएगा ये वाला इसमें. सो दैट्स व्हाई इट ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस. दैट इज, इट कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स विद द टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड. कंटिन्यूअसली डिफॉर्म्स होता जाएगा फ्लूइड्स में. दैट इज अ प्रॉपर्टी. तो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होता जाएगा इन फ्लूइड्स. सॉलिड्स में थोड़ा थोड़ा डिफॉर्म हो जाएगा. नाउ इन दिस आवर पोर्शन में फ्लूइड को वी विल ट्रीट एज आइडियल फ्लूइड. ओके, अदरवाइज फ्लूइड इफ यू सी, उसमें फ्रिक्शन, एक्चुअली प्रैक्टिकल फ्लूइड इफ यू सी, आपको फ्रिक्शन रहेगा, विस्कस रहेगा ना, फ्रिक्शन रहेगा, रोटेट भी होगा ना, वो फ्लूइड रोटेट भी हो सकते हैं. ऑल इफ यू टेक इनटू कंसीडर वेरी डिफिकल्ट हो जाएगा. दैट्स व्हाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा 11th क्लास में वी आर ट्रीटिंग एज ए आइडियल फ्लूइड ओनली. आइडियल फ्लूइड मानने से एडवांटेज क्या है, लाइक हम लोग आगे काइनेटिक थियरी में पढ़ने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन बोल के. आइडियल गैस, वी आर अज्यूमिंग सम प्रॉपर्टीज, इलास्टिक कोलिजन है वो बोल के, ऐसे सम आइडियल फ्लूइड बोल के मान रहे हैं. ओके, so what is the thing, देखो, ideal fluid is one in which the liquid is incompressible. मतलब what is meaning of incompressible, वो compress नहीं होगा. मतलब उसका मीनिंग क्या है, उसका डेंसिटी इज सेम. So can you go back for a second? हाँ,
For 1 second. Okay, continue. You say it change. Incompressible means density is same. ऑन द वीडियो पढ़ो, लिखो अच्छे से लिखो, वेयर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, किधर गया, अच्छे से करो. इनकम्प्रेसिबल, सी दिस ऑल बेसिक्स आ गए तो देन ओनली आपको मजा आएगा, नहीं तो बोर लगेगा क्या है सब कुछ बोल के. अंडरस्टैंड करो, लिखो अच्छे से, प्रॉपर लिखो. इनकम्प्रेसिबल मीन्स डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर फ्लूइड में. ओके. नॉन विस्कस मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन. And irrotational means there is no omega, angular velocity will not come into picture, no angular velocity. Okay, these three characteristics we are assuming, that's why it is called ideal fluid. So हमारा questions will be simpler हो जाएगा. Okay, थोड़ा simpler ideal fluid मान के. Okay, चलो. Now first we'll go for the density of fluids. So non-viscous and what's the last one? Irrotational. Irrotational, no angular velocity. Okay. Now first we'll consider about the density of fluids. Density basic definition मालूम है? Density का definition क्या है? Density equal to Mass by volume. mass by volume. So water का density बोल सकते हो? Water का density how much? 1 gram कितना? per cc. 1 gram per centimeter cube. 1 gram per centimeter cube. Okay. So density लिखो. Density का symbol is rho. Mass by volume we call as mass by volume, and density is mass by volume. Units are kg per meter cube और सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको डेंसिटीज के बारे में, दो डेंसिटीज का आपको पूरा बाहर करना पड़ेगा. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 क्यूब kg per meter cube और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. whenever they are given in centimeters में अगर कुछ दिया तो 1 डाल दो डेंसिटी, अगर मीटर्स में दिया तो 1000. 10 क्यूब इज 1000 kg per meter cube. दिस इज द डेंसिटी ऑफ वाटर. एंड डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बोल सकते हो? 13.6. यस, लिखो डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, Hg है ना, इट इज 13.6 इंटू 10 क्यूब kg per meter cube और ग्राम में क्या होगा? डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 करो. 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. So gram per centimeter cube is greater than kg per meter cube. Units, you're telling 1 meter and 100 centimeters are same or different? Same. Greater सब नहीं No, है. so like 1 gram per centimeter cube is 10 power 3 kg per meter cube. No. Okay, units conversion you're telling, but value wise में same. Okay, 13.6 10 cube kg per meter cube and 13.6 So like kg. we say 13.6 gram per centimeter cube and 13.6 kg per meter cube. 13.6 gram per centimeter cube is bigger, right? Yes, yeah. Okay, डेंसिटी कहाँ गया? ये दोनों वैल्यूज आपको बैठ करना. सबसे ज्यादा डेंसिटी लिक्विड कौन सा है? मर्क्यूरी. मर्क्यूरी इज द मोस्ट डेंसर लिक्विड. ओके, 13.6 वाला फेमस है. इन 10 क्यूब, 10 क्यूब निकाल दिया तो ग्राम में आएगा. चलो, नाउ विल टॉक अबाउट रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी. टेल मी, रिलेटिव डेंसिटी मींस Density of an object with respect to density of water at 4 degrees Celsius. why 4 degrees Celsius? So that I don't know. Okay, anybody? So Pranav, density, relative density का definition क्या है and why 4 degrees Celsius? So because at 4 degrees water is at 1. Water density is 10 power 3 at 4 degrees. at 4 degrees में maximum density होगा water का density. That's why we are taking as water का this one. So लिखो density of the substance by density of water at 4 degrees Celsius. आपको anomalous expansion of water बोल के thermal properties of matter, इसलिए jump करके आए तो ऐसे थोड़ा बीच में मिस होगा, because they directly jump to the last chapter mechanical properties of fluids. ये पूरा thermal properties of matter में आएगा.
ओके, एट 4 डिग्री सेल्सियस में डेंसिटी जो भी वैल्यू पड़ रहा है ना, दैट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, दिस इज relative density. And now now water, you tell me relative density of water कितना होगा, फाइंड करो. डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय, ठीक है, फर्स्ट रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी फाइंड करो, टेल में. 13.6. डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, राइट. सो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस कितना होगा नॉर्मली, 13.6 इंटू 10 क्यूब, राइट, kg per meter cube by, tell me, in density of the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, that is maximum, right, कितना होगा, that is कितना, 10 power 3. तो 10 क्यूब आएगा ना, तो 13.6 आएगा. मतलब आपको क्या है, हाउ टू फाइंड, आई एम टेलिंग यू, रेडियो डेंसिटी सिंपली आपको ये लिखो, समझ में आएगा. रेडियो डेंसिटी कैलकुलेट करना आ रहा है कृष्णा, इसका यूनिट्स क्या है, टेल में रेडियो डेंसिटी का यूनिट्स कृष्णा, Sir, no इसका units. यूनिट्स, हाँ No units. हाँ, नो यूनिट्स. ओके, सो मतलब रिलेटिव डेंसिटी आपको कैसा फाइंड करने का, सिंपली देखो, वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस. अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू डाले तो दैट इज ओनली रिलेटिव डेंसिटी. ओके, मर्क्यूरी का कितना होगा, टेल में, आरडी का, मर्क्यूरी का 13.6. सिंपली 13.6, बिकॉज वाटर का डेंसिटी इज 10 क्यूब, राइट. हाउ टू कैलकुलेट, देखो डेंसिटी का, your relative density of mercury we are calculating, suppose example I'm telling you, density of substance mercury का कितना है, 13.6 into 10 cube by density of water at 4 degree celsius 10 cube, right, डिवाइड किया तो 13.6 आया ना. that 13.6 value is matching with the gram per centimeter cube, right. that's why कोई भी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करो बोल तो उसका वैल्यू ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. समझ आ रहा है, understood कृष्णा? yes. So simply gram per centimeter को value find करो, that is only relative density of substance. Okay. Now क्या है, suppose आपको density में, कब बेटा इधर तक, no एक क्वेश्चन करो पहले, you can use calculator also if you want. A hollow metallic sphere has inner and outer radius are given to you. With the mass of the sphere also given, density of the material I want. You can use calculator, no problem. Centimeters to meter you have to convert. So should we leave in terms of pi? In terms of pi, Yeah. you can use 3.14. Calculator, that's why I take the help of calculator, no problem. Okay. So you should convert the centimeter to meter, right? Meter, definitely, right? Because we are using mass kg, right? So Yeah. SI units we have to take. Sir, answer we want in gram per centimeter cube or kilogram per meter cube? Kg per meter cube. Okay.
Sir, density is approximately 70. 70. So video start. देखेंगे. And relative density? Density Sir, of the I got substance. 682 kg by meter cube. कौन सा density? Yeah. 682. Okay, देखिए. Yeah. Take the help of calculator, no problem. Sir, in decimal, it will be 69.4444. Okay. देखेंगे. So it is density is 60. I got 681. I got 6.82 into 10. You grams you're telling, So no, sir, in grams I got 0.682. Wait, 1 second. Sir, first what I did was I wrote the volume in centimeter cube only. And then I found the density in gram per gram per centimeter centimeter cube. cube. And then I converted it into. Yes, the gram per centimeter cube ka value is nothing but the relative density. Wait, sir, 1 second. Oh, so they took 367. So when I used calculator, I got 3665.19. No problem. थोड़ा इधर उधर no problem, but approximate answer मेथड समझ में आया तो बस. अनुष्का, चलो. Sir, I think, sir, you'll get 0. Wait. You get 0.682. So won't it be 0.682 into 10 power minus 3? See, आपको ये वैल्यू सेम आया आपको? Yeah. Now relative density how to find? In gram. Oh, sir, I got my mistake. 1000 करो. No, sir, I got my mistake. So I'll get 682. Yeah. Yes. Okay. चलो. Sir, 1 minute. And then I'll get a 0.682. Okay. Yeah, go, sir, got it. Okay. चलो. Now we'll talk about the density of mixtures. Okay. Density of mixtures of 2 or more liquid. 2 or more liquid mix करूंगा. पूरा liquids only भी ऐसा है. Separately solids, separate solids है. Okay. And gases, kinetic theory of gases में करने वाला है. Okay. So first fluids के बारे में we are learning. Okay. So suppose मान लो case 1. Suppose 2 liquids of density ρ1, ρ2 and masses m1, m2 are mixed together. Then the density of mixture how to find, tell me. Suppose एक कंटेनर में m1 मास है, उसका डेंसिटी ρ1 है. मैं आई विल मिक्स टुगेदर विथ m2 मास इन ρ2 डेंसिटी. मिक्स करूंगा. उसका कंप्लीट मिक्स करने के बाद फाइनल डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर कितना है इज आस्किंग. दोनों में डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी वाला मिक्स करूंगा, बोल के मिक्स करूंगा. फाइनल डेंसिटी कितना है, हाउ टू फाइंड? आपको सिंपली दैट एक ही फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. दैट इज सो आपको कैसे यूज करेगा? सिंपली टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. ये एक ही फॉर्मूला याद रखो. दैट्स इट. डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग. टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम ये करो. दैट्स इट. इन ऑल क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. टोटल मास, total volume is v1 plus v2, but they given in terms of densities, right? So you converted volume को m1 by ρ1, m2 by ρ2. if you इधर तक रुक सकते हैं. so in special case क्या है, if m1 equal to m2 है तो then आपको रो का फॉर्मूला ये आ जाएगा 2 ρ1 ρ2 by ρ1 plus ρ2. बट आपको फॉर्मूला ये याद रखेगा. ये क्वेश्चन करने से एनीथिंग यू कैन सॉल्व. टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर. देखो, total mass by total volume is the density of the mixture. So whenever I mix two masses, m1 ρ1, other mass is m2 ρ2.
दिस वीक में नो एग्जाम राइट आपको? So next 2 weeks, I don't think so. We have. Okay. Maybe they will keep complete statics in by next week. Complete statics and Sir, dynamics. they're putting IP, sir, this week. That's Uh-huh. why they're skipping the test. Oh. IP पढ़ रहे थोड़ा तो? Right, yeah. So like I have only one like And around like 10 questions left. आइडिया कैसा है आईपी का? क्या आइडिया मानो? हाउ टू स्टडी आईपी? So they already gave us a document. In the document, they told us to do all those questions. So I'm only doing those questions. हाँ, सो उसी में आएगा। सीबीएसई ऐसा नहीं है, द पर्सन हु स्टडीड सीबीएसई लाइक डीपीएस वगैरह करके आएगा ना, दोज पीपल को डर लगेगा एग्जाम क्या है कैसा है बोल के। बट एग्जाम आईपी विल बी सो इजी, ओनली पीवाईक्यूज ओनली विल बी कमिंग। मतलब चैप्टर में यू विल हैव 3 to 4 क्वेश्चंस और मैक्सिमम 5 क्वेश्चंस आएगा, उससे ज्यादा नहीं है। सो वही 5 क्वेश्चंस करने का, वो पूरा करेंगे बोलते टाइम वेस्ट हो जाएगा। वही क्वेश्चंस आएगा, सो वही क्वेश्चन करके आराम से जाओ, दस कुछ नहीं है। ओके, तो लास्ट में एक दो टेस्ट ले लेंगे आईपी का, इधर भी हो जाएगा। या 8 मार्क क्वेश्चंस में पहले बोलूंगा थोड़ा वो चैप्टर्स में चूज करने का। एंड दूसरा, आपको पैटर्न मालूम है ना, 4 मार्क क्वेश्चन कितना है? कितना आएगा सर पैटर्न मालूम है आपको? 8 मार्क क्वेश्चन कितना आएगा बोल के? Sir, for us, this time IB exam is only for 40 marks or something. They're not testing the entire portion, so they Yeah, decrease so they're the not giving for total 80 marks. marks. स्कूल का छोड़ो, मेन एग्जाम का टेलिंग। मेन एग्जाम का 8 मार्क क्वेश्चन का, 8 मार्क क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन विल बी कमिंग। आउट ऑफ 3 में यू हैव टू राइट 2। ओके, दैट 2 द स्पेसिफिक चैप्टर्स ओनली विल कम। For that specific chapters only you have to learn. Okay, the specific chapters only you have to learn. And उसमें दो ही क्वेश्चन पढ़ो, 3 क्वेश्चन का जरूरत नहीं है। डोंट गो फॉर 3 चैप्टर्स 4 चैप्टर्स, वही आएगा, रिपीट होगा ना। सो 2 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन ही करो, नो प्रॉब्लम। इफ यू वांट एक्स्ट्रा यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। 3 क्वेश्चन कर सकते हैं, बट सेम तो एग्जाम पेपर तो सेम आएगा। कौन सा चैप्टर है, ब्लू प्रिंट रहेगा ना, वही चैप्टर से 8 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स क्वेश्चन वही चैप्टर से आएगा। सो यू टू चूज लाइक दिस। लास्ट में करेंगे, लास्ट में थोड़ा होने के बाद विल डू 1 or 2 क्लासेस में, समझ में आएगा। ओके, हो गया कॉपीड? No. Yes, sir. Case 2. If the liquids of densities rho 1, rho 2 having volumes are mixed together. Now volumes and densities are given to you. Then density of mixture कैसे आएगा? आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। What is the formula? Tell me. Total mass by total volume. ये फॉर्मूला, that's it. Total mass by total volume. This is the density of the mixture. So m1 plus m2 by v1 plus v2. Here masses are not given, that's why we converted into densities. Density into volume, that's why we learned about densities initially starting में। density into volume by v1 plus v2। अगर if volume v1 equal to v2, then density का mixture का ऐसा हो जाएगा। बट इस पर डिपेंड मत हो जाओ, ओनली लर्न दिस फॉर्मूला, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। डन? Yeah. चलो, ये मैं किस करेंगे बेस्ड ऑन दिस। चलो करो। 2 immiscible densities are given to you, and the ratios of the masses are 2:3
find the average density of the liquid combination. मतलब डेंसिटी ऑफ मिक्सचर चाहिए आपको. एक ही फॉर्मूला यूज करने का, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम. ऑलवेज डोंट डिपेंड ऑन एनी फार्मूला, सिंपली टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम यूज करो, आ जाएगा ऑटोमेटिकली. यू कन्वर्ट इट इनटू व्हाटएवर यू नो एंड टेल द आंसर. So I got 1.09. 1.09. ओके देखेंगे. Use only total mass by total volume. Mass is not given, that's why it converted into densities. Mass is given 2m and 3m, right? Total volume is not given, that's why converted into density and mass. Always use total mass by total volume. Sir, even I got 1.09. Okay. Okay, तो देखिए. Do you want in gram per centimeter cube or do you want in other? No, gram only. Yeah. कितना है कृष्णा? 2m and 3m ले लो. And Sir, I'm कितना getting आंसर 4 है? by 11. Okay. 1.09 is answer. So density of mixture always what formula I told you to remember? Total mass by total volume. Total mass is how much? When you split into 2m, 3m, 5m, right? And आपको total volume is not given, right? Density is equal to mass by volume, and volume is equal to mass by density, right? So first mass कितना है? 2m by density is 2.5 plus second mass का 3m by density is 0.8. खत्म. आपको solve करो, you'll get the answer approximately as 1.09 gram per centimeter cube. So don't remember any other formula. Always remember total mass by total volume. That's it. करो ना. करो. Same model करो. He's asking density of the resultant mixture. He has given densities are given to you, and the volumes are given now. 3:5. So I got 1.325. देखें. Sir, I'm Oh, getting okay. 1.2. 1.2. Okay, देखें. Splitted right here 3v 5v बोल के. So I got 4.07. तीनों का एक आंसर है. पक्का देखो. One second. चेक करो. 1, 2, 3, 4, 3.6. Oh, 1 second. One second. So 1.325. 1.32, huh? 1.325, yeah. Okay. So answer is 1.3. Perfect. Very good.
कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा थोड़ा, 1.0 ऐसा कुछ है, कुछ नहीं इधर 3v। सी डोंट रिमेंबर एनी फार्मूला, ये फार्मूला डोंट रिमेंबर, व्हाट इज द फार्मूला यू हैव टू यूज ऑलवेज, नहीं तो आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो जाएगा। टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, खलास, डोंट सी एनीथिंग। masses are given, anything, no, volumes are given, yes, total volume is how much, 3v, 5v, 8v. Okay, total mass is not given. Density is equal mass by volume, mass is equal density into volume. So density into volume, first density कितना है, 1.2 into volume is 3v, okay, plus second density is 1.4 into volume is 5v. So v got cancelled, just multiply, you'll get the answer. टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम फॉर्मूला शीट में डाल दिया ऑलरेडी, ओके, मैं देने वाला हूँ, वो पूरा बैठ करो सर, ओके, समझ में आया? यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस फॉर्मूला, दैट्स इट, टोटल मिक्सचर, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम। ओके, नो आ गया प्रेशर, ये पूरा एंडिंग तक ही प्रेशर 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 प्रेशर, आपको एग्जाम्स होने तक प्रेशर ही होगा, ओके, इतना बड़ा प्रेशर है अभी। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला मालूम है ना, व्हाट इज प्रेशर? Force by area. Thrust per unit area or normal force per unit area. Perpendicular force always we should take. Pressure में always take perpendicular force. That's why thrust per unit area बोलते हैं उसको. Okay. Suppose मान लो you are applying any surface का, liquid surface का मान लो, I am applying small force is delta F. I am applying and area में small area I am taking delta A. So what is the formula in this case में pressure का formula is delta F by delta A. So delta F is nothing but the normal force on the surface area. Normal force means perpendicular force. Suppose notice board में, suppose you want to put pin, that pin is nothing but you are applying perpendicular to surface, right? That force only we should take in in this calculation में, okay? And SI units मालूम है ना, Newton per meter square, or we can call it as pascals. Okay, लिखो. Pressure is force upon area. And is scalar quantity or vector quantity? Pressure. Pressure is which quantity? Scalar. Scalar quantity. Yes. Pressure is scalar quantity because it has no direction. Fluid में molecules will exert a pressure on the area always perpendicular only. Okay. It is scalar quantity. Okay. आगे and SI units भी लिख लो. 1 second. Newton. SI units is Newton per meter square, which is called as pascals. On the video Pranav, why are you offering all this? क्या कर रहे, पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री बायोलॉजी पे पढ़ रहे हैं और मैथ्स पढ़ रहे हैं? Sir, I have a doubt, sir. Yeah, tell me. Sir, should the force always be perpendicular? Yes, perpendicular force only should take. If they are putting any angle, you take the components and find the perpendicular force. Okay, चलो. Then now इसका SI units I told you, pascals. Pascals is nothing but Newton per meter square बोलते हैं. Okay, and some other units are there. What are the other units of pressure? Sir, ATM, bar, tor, mmHg. That's it, I guess. MM what है? What are you telling? MM of H, yeah. What MM of H? Explain करो. Millimeter of mercury. That only millimeter कैसा आएगा? Mercury millimeter is the length का units है. चल. So you get rho gh. नहीं, वो चीज मुझे नहीं है. I am asking units of the pressure. He told millimeter of Hg बोल के बोल रहा है. What is millimeter of Hg का pressure का क्या relation है? The barometer thing. Explain करो. So the height at which the liquid rises in the barometer, the pressure of that will be
गुड. सो क्या है, आपको 760 mm ऑफ एज बैरोमीटर पढ़ेंगे. आपको बैरोमीटर में इतना हाइट लेगा ना, वो हाइट मेजर किया तो 760 mm ऑफ एज आएगा. दैट इज एग्जैक्टिंग ए सेम प्रेशर ऑफ दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ओके. सो एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना लगा रहे हैं, सेम प्रेशर विल बी कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम ऑफ 760 mm विल एग्जर्ट से प्रेशर. दैट्स पे आपको उस प्रेशर में mm ऑफ एच बोल के बोलेगा. ओके. सो कॉमन यूनिट्स लिखो. एटमॉस्फेयर प्रेशर इज 1.013 10 power of 5 pascals and 1 bar is 10 power of 5 pascals. Okay. सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये दोनों मेजर इंपॉर्टेंट है. एटमॉस्फेयर प्रेशर मालूम है ना. एटमॉस्फेयर प्रेशर मींस हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर इज राइट, दैट इज एक्सर्टिंग ए प्रेशर इतना, सो मच हाई प्रेशर, 10 power of 5 सो हाई प्रेशर. ओके. उसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मतलब प्रेशर नहीं है तो क्या होगा, ऐसा एक बार थिंक करके ट्राई करो. ओके. नॉर्मल 7th क्लास में पढ़ा होगा ना, अगर प्रेशर नहीं है तो क्या होगा, कैसा होगा बोल के. ओके. दिस मच हाई प्रेशर वी आर exerting on our head and 1 bar is nothing but 10 power of 5 pascals. These are the units of the pressure only. Okay. So where, chalo. So can't we just say 1 ATM is approximately equal to 1 bar? हाँ, लिख सकते हैं. 76, that is equal to 760 mm of Hg equal to 1 torr approximately, but exact नहीं है. Okay, that's why उससे अच्छा better नहीं, not I did not took. 1 atmosphere is 1.03 10 power of 5 pascals and 1 bar is 10 power of 5 pascals. Okay. Okay, करो. JEE means questions करो. Sir, I got 10 power 6 by pi. 10 power 6 ये Yeah. telling option कर रहे यार, something you're doing So, no, sir, I got. on the video and do why you're offing the video. What is the pressure exerted by the heel on the horizontal force? And that heel is nothing but the diameter is given, circular, है ना. Sir, 1.27 into Sir, 10 power option A. 6. So 1 second. ये आया सबको. So 1 second, 1 second. Is it a wait 1 second? The game. Oh, circular. Okay, 1 second. Yeah, sir. A. कितना सेम आया. यस. नेक्स्ट, variation of pressure with depth. As we go inside the ocean, the pressure will increase or decrease. Tell me. As we go inside the ocean, the pressure will increase or decrease, and why? Why also I want. Sir, it'll increase. Why? Sir, because the height is decreasing. Height is decreasing. Height depth is increasing, right? मतलब as we go inside the depth में, you're telling increase or decrease first of all. As we go inside the depth of the Sir, ocean. it'll increase. Why I'm asking.
So there'll be more liquid above you, so like it'll like put more pressure. ऊपर more pressure, yes. The small समझ में आ रहा है? More it So like that. it increases, right? हाँ? The lower you go, the higher the pressure. Higher the pressure. Okay, that's very that's why scuba divers, if you see, they are they are so dangerous. Dangerous job है that one actually. They go very high, right? Then क्या होगा? The pressure is so much, so much, so much on our body में पूरा हार्ट के ऊपर, लंग्स के ऊपर पूरा प्रेशर आता जाएगा. बहुत हाई प्रेशर लगता है वो, बहुत डिप्थ में. हम लोग स्विमिंग में नॉर्मल ऐसे जा रहे, बट दे आर गोइंग वेरी सो मेनी किलोमीटर दूर में अंदर अंदर जाएगा ना. सो हाई प्रेशर वी आर गेटिंग. सो बैलेंस करने के लिए क्या करेगा वो? टेल मी हाउ ही कैन बैलेंस दैट प्रेशर. ओके, टेल मी प्रेशर क्या. सुना नहीं यार, मतलब ऐसे काम के वास्ते जाएगा, एंजॉय करेगा, प्लेइंग विद द फिशेस से ऐसा खेलेगा, ऐसा दैट्स इट. देखिएगा एक्चुअली क्या है, he put the inside mouth में ऑक्सीजन लगाएगा ना, that pressure he will balance with the external pressure. Inside में जो भी ऑक्सीजन गैस जा रहे हैं ना, that pressure balance with the external pressure of the water and the suit also will be there, right? That दोनों balance होने का. अगर you tell me suppose he will come suddenly upper side, suppose any crocodile is there coming, अरे बोल के ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा मालूम है? इनसाइड प्रेशर पहले से मोर था ना, अभी ऊपर जाने के बाद आउटसाइड प्रेशर कम हो जाएगा, इनसाइड प्रेशर मोर हो जाएगा, फट बोल कर उठ जाएगा. हार्ट विल बी गो इन दिस साइड, लंग्स विल बी गो इन दिस साइड. दैट मच डेंजर है. ओके, दैट्स व्हाई व्हेनेवर एनी प्ले कम्स ही विल स्टे देयर ओनली. देखकर अच्छा बाबू बोल के ऊपर नहीं आएगा वो, उसको कैलकुलेशन इज देयर. एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो थोड़ा लेवल वो कम करेगा, वो मीटर्स रहेगा उसका, इतना तक डेप्थ आने के बाद थोड़ा और भी कम करेगा. सो ऐसा धीरे धीरे आएगा, ग्रेजुअल डिक्रीज होगा, ऐसा करेगा. ओके, सो ऑलवेज ही विल बैलेंस. दैट्स व्हाई उनका जॉब्स में हाई सैलरीज आएगा. हाई सैलरीज मिलेगा. वाई? बिकॉज कभी भी मर सकते हैं ना. सो वेर एवर रिस्क इज मोर, the salaries are more. That's why software employees का salaries are more. By because risk बहुत ज्यादा है. कभी भी जाएगा, पिंक स्लिप बोल के रहेगा. They'll put a pink slip that we want the मतलब आपको टैलेंट है, सब कुछ करेगा, बट आप उनका कंपनी को उतना देने का नहीं रहेगा. The persons, the more the salary you go, the more the risk the job is. So they'll put a pink slip that you're what we say, you're fired बोल के. और they will tell no we company projects नहीं है हमारा कम है, so you can go leave बोल के. let's ऐसा बहुत सारे employees they are leaving, they're getting, even though they're talented everything, because कंपनी उनका प्रोजेक्ट्स को कम करने के लिए, उसका पैसे कम करने के लिए, कटिंग कॉस्ट करने के लिए they will remove the employees. So that's why software employees का ज्यादा okay. तो as we go inside there's a depth में जाएगा, right? So देखो, when you go deeper in the fluid the pressure increases. short form में लिख लो. This happens because the weight of the fluid above that point increases with depth. ऊपर weight रहेगा ना हमारा, ऊपर weight increase होता जाएगा. That's why the pressure is more as we go inside the depth. Calculate how much pressure is there. Suppose you have a cylinder है, मान लो ये पूरा पानी भरा है. ओके, पानी भरा है. हियर आउटपुट आउटसाइड इज एटमॉस्फेयर प्रेशर रहेगा ना, आउटसाइड इज एटमॉस्फेयर प्रेशर. बॉटम में प्रेशर आई वांट टू कैलकुलेट. ओके, दिस इज द हाइट h, डेप्थ इज h. ये डेप्थ नीचे है. ओके, मान लो एक कॉलम है, एयर का, वाटर का कॉलम है ये ऊपर, इसके ऊपर. ओके, सो व्हाट इज द प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? इसका डेंसिटी इज रो. सो P का प्रेशर का फॉर्मूला इज, टेल मी, आउटसाइड प्रेशर P0 प्लस रो GH is a formula. Very important formula. As we go inside, देखो atmosphere pressure से we are adding rho GH. Is a pressure. Sir, P0 is atmospheric pressure. P0 is the atmosphere pressure.
कॉलम का प्रेशर है, रो जी एच. H is a depth, and we should take always a vertical height only, not any height. Vertical height लेने का. H is the vertical height. सपोज कोई भी शेप का रैंडम में दिया था भी ऐसे जेड शेप में दूंगा, पानी है. ओके, इधर ऊपर ओपन है, इधर क्लोज्ड है सपोज. ओके, पूरा पानी है, ये ऊपर पी नॉट है. आई वांट प्रेशर एट दिस पॉइंट, दिस एच. ओके, सो एट दैट टाइम प्रेशर कैसा आएगा? वी शुड नॉट टेक दिस लेस हाइट. कौन सा हाइट लेगा? दिस वर्टिकल हाइट ओनली शुड टेक. ओके, वर्टिकल कॉलम का हाइट ओनली शुड टेक. मतलब इसके ऊपर कितना कॉलम है उस 10 किलोमीटर दूर में वो पानी की वजह से ऐसा नहीं रहे, ऊपर ही रहेगा. सो ऑलवेज वर्टिकल हाइट ओनली. सो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच इज अ फॉर्मूला. ओके, सो इसका डेरिवेशन एक बार देखो, बट नो नीड ऑफ राइटिंग. दिस इज अ फॉर्मूला टू रिमेंबर. रो जी एच इज अ फॉर्मूला. P नॉट प्लस रो जी एच. एंड इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, टेल मी कैसा आएगा ग्राफ? इफ आई ड्रॉ द ग्राफ P वर्सेस H. Sir, P is for base height. Base Huh? thing. P is pressure P at the base. P प्रेशर एट द बॉटम साइड. बॉटम में किधर भी होने दो, प्रेशर बॉटम में, बेस साइड. एज वी गो इनसाइड में प्रेशर 2 पॉइंट लेने का, ऊपर और नीचे. इस पॉइंट में प्रेशर कितना बोलता? P नॉट प्लस रो जी एच. इफ आई वांट टू ड्रॉ द प्रेशर एंड हाइट का, डेप्थ का, विच ग्राफ रहेगा? देखो इस पावर 1 है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा. कंपेयर विथ y इक्वल mx प्लस c. देखो y एक्सिस में P है, y इज इक्वल टू x एक्सिस में h है ना, दिस इज mx प्लस c, राइट? y इक्वल mx प्लस c फॉर्मेट में है ना ये वाला. m इज Yeah. कॉल्ड स्लोप, मालूम है ना? m इज कॉल्ड स्लोप. एंड y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट p, राइट? एंड पॉजिटिव है ना, ऊपर आएगा p नॉट. एंड द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड स्लोप कितना है? if we calculate the slope, tan theta is equal to कितना है? Rho g is a slope. Rho g is a slope. So pressure and depth का आपका graph will be this is a straight line graph only, and the slope is this is slope. Tan theta is nothing but slope, right? Slope is nothing but rho g. So height, we should take the vertical height. Very important. So should I draw the graph or no need? हाँ, ग्राफ ड्रॉ करने का. एक एक पॉइंट विल बी लिंकिंग टू द क्वेश्चंस. So then can you move a little? Yes, done. यस, देखो डेरिवेशन जरूरत नहीं है एक्चुअली. आपको देखो, कंसिडर फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो एट रेस्ट. एक डेंसिटी फ्लूइड इज डेंसिटी रो है, इसका डेंसिटी इज रो. इन द कंटेनर, लेट द प्रेशर एट द आउटसाइड इज P नॉट, राइट? एट डेप्थ H द प्रेशर इंक्रीजेस ड्यू टू वेट ऑफ द फ्लूइड कॉलम. देखो इस कॉलम का वेट के वजह से द प्रेशर इज डेप्थ के साथ इंक्रीज हो रहा है. ओके, द वेट ऑफ द फ्लूइड कॉलम कितना है? वेट का फॉर्मूला इज mg, राइट? mg is the weight of the column. mg, m in terms of density, and tell me density into volume. Volume of this cylinder is how much? Area into height, and density into volume, right? Area into height. Okay, this is the total weight of the fluid acting on this surface mein. Okay, and we know the formula. Pressure is force upon area. Yeah. Force is nothing but weight. Weight is nothing but देखो rho a h g by area. Area is a. So क्या था? Rho g h. So rho A मतलब is liquid, VG, right? हाँ बरोबर. Area into height can be written as volume, right? Area into height is volume only. That's why we wrote in terms of container area में we wrote. Okay, this mass is nothing but density into volume, right? This area is nothing but volume. Okay, now the force आ गया ना. The force is nothing but weight, right? So force के जगह में weight by area, A cancel.
so rho gh. Okay, now what is the total pressure bottom में ऊपर P naught and liquid column की वजह से pressure कितना है rho gh, so total pressure will be P naught plus rho gh. समझ में आया? Understood? Yes. देखो, therefore total pressure is P naught plus rho gh. समझ में आया? Yeah. Sir, can you go back? सिंपल डेरिवेशन है वेट कॉलम के वजह से वी कैलकुलेट mg and mass we wrote in terms of density into volume and divide with pressure, we got the mgh. नोट्स अच्छे से बनाओ, लास्ट में यही हेल्पफुल होगा बिकॉज नो यू Sir, कैन not नॉट डू writing derivation, sir. नो नीड ऑफ राइटिंग बट अंडरस्टैंड थिंग्स शॉर्ट फॉर्म में लिखो अच्छे से. सो लास्ट में यही यूज होने वाला है आपको डेरिवेशंस में बिकॉज दैट टाइम यू कैन नॉट डू ऑल मटेरियल्स राइट. ओके, so total pressure is P naught plus rho So g. can we use that P equal to P naught plus rho g in all cases? mg will be only this only, liquid column का weight we calculate. P is equal to P naught is only for pressure at bottom surface. Can we use it only at any point? surface में surface का air का column के वजह से, only that air column के वजह से the pressure is total pressure below is P naught. Okay, and we calculate pressure only because of liquid column that is rho gh, then we added with this P naught. P naught बोले तो क्या है, सरफेस से ये कॉलम के पूरा सरफेस तक उस एटमॉस्फेयर तक टिल एटमॉस्फेयर तक जो कॉलम है ना उसका प्रेशर टोटल प्रेशर इज P naught. समझ में? ऐसा नहीं कि ओनली दिस लेयर का P naught नहीं है, पूरा कॉलम का टोटल सरफेस तक, मतलब एटमॉस्फेयर कितना तक है उतना दूर से हमारा सिर पर इस वाटर कॉलम का कितना लग रहा है, दैट इज द प्रेशर. ओके ओके, अंडरस्टूड इट? ओके, so P equal P naught plus rho gh is the answer. देखो rho gh is nothing but pressure due to liquid column, only liquid column के is rho gh. Okay, and graph तो already मालूम है, no numerical कर सकता Sir, है once go back now. या Okay, sir. चलो रिया. So as we go below the depth the pressure increases. कितना फॉर्मूला है, P naught plus rho gh. ओके, रेडी क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्या तो अच्छा है, नहीं तो इसमें टाइम लगेगा. So next class we're going to do accelerating fluid.